हेलो व्यूअर्स, कैसे हो? मेरे ख्याल से बढ़िया हैं आप लोग। तो मैं आप लोग तो जानते हैं कौन हूँ मैं, डॉक्टर Kr.Chakrabarti ऑन बिहाफ ऑफ स्टडी फेस्टिविटी। टॉपिक क्या है आज हमारा बाबू? देखिए ये टॉपिक हम लोग क्या टॉपिक से चल रहे थे। दिस इज़ द 5th क्लास ऑन इकोनॉमिक्स। This is the 5th class on economics. The first class was taken months back, and the second class, third class, and 4th class have been done consecutively. The second class, we took up the detailed discussion on the general concept of economics. हम लोग जैसे सोचते हैं, ठीक है ना? আমরা কি করেছি ইকোনমিক্সে? আমরা ইকোনমিক্স সাধারণ অর্থে ইকোনমিক্স কাকে বলে সাধারণ মানুষ যেমনভাবে ভাবতে পারে সেইভাবে করেছি। जैसे सिंपल इंसान, जनरल इंसान जैसे सोच सकते हैं। एंड इन द थर्ड एंड फोर्थ क्लास हम लोग क्या किए हैं? हम लोग दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो डेफिनेशन दिए हैं उनको लिए हैं। पहला में क्या था? First definition was the classical definition given by Adam Smith. क्या बोला था Adam Smith? As per Adam Smith, economics is the science of wealth. Okay? What type of wealth? It is the wealth of, it's material wealth. And as per Adam Smith, economics is the science that inquires into the nature and causes of wealth of nature. And this school of thought basically takes up the economic activities as production, accumulation of wealth. ठीक है ना? तो wealth यानी संपद को पैदा करना और संपद को accumulate करना, इकट्ठा करना, संपद उत्पादन करा और एकत्रित करा, এই দুটোই হচ্ছে আমাদের টাস্ক অ্যাজ পার দ্য থটস অফ দ্য মেম্বার্স অফ দি ক্লাসিক্যাল স্কুল অফ ইকোনমিক্স লিডেড বাই অ্যাডাম স্মিথ। Next, in the next class, that is class number 4, I took up the presentation on the thoughts of economics, the definition of economics as given by neoclassical school headed by अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो बोले थे वही हम लोग कंसीडर किए थे इन आवर 4th क्लास। अब मार्शल क्या बोले हैं? मार्शल ने बोले हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी, इन डे टू डे लिविंग इंसान लोग जो करते हैं उसको स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। क्लियर? एंड ordinary course of business means two basic activities. One is earning and the other one is spending. For what purpose? Earning means earn karna, yani getting the income, having the money accumulated, and spending means collecting materials with the help of money for meeting the day-to-day requirement. That is overall financial satisfaction, and that is welfare. Classical definition is known as wealth definition. Neoclassical definition is known as welfare definition. This welfare definition, welfare means इंसान को अच्छाई, okay? Welfare. So this welfare definition has strongly been criticized by Mr. Lionel Robbins. In 1932, he published one book, and the name of the book is Essays on the Nature and Significance of the Economic Science. Clear? That was यही था उनका book, यही था the name of his book, and this book was published in 1932. By whom? By Lionel, as you may pronounce it, Lionel Robbins. तो रॉबिन ने एक किताब पब्लिश किए थे 1932 में, एंड उन्होंने एक डेफिनेशन दिए हैं। क्या डेफिनेशन है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस, माइंडेड फ्रेंड आप इसको अच्छी तरह से देखिए, इकोनॉमिक्स इज द साइंस
which studies human behavior, that studies human behavior. देखो किसको किसको रिलेट कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग इट इज ए साइंस, इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर इन, हाँ, सो साइंस मीन्स विज्ञान, ओके, as relationship between ends, ends the very very important, ends means क्या बाबू, ends मतलब होता है, ends का जनरल मीनिंग इज ऑब्जेक्टिव, बट है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स आपको जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, बट हियर इट मीन्स wants, wants मानी wants, desire, demand, all these constitute the ends, and scarce, between ends and scarce, scarce means विरल, जो ज़्यादा नहीं है, between ends and scarce means which have alternative use. Scarce means first of all scarce means बहुत कमती, means क्या है, मीन्स है तुम्हारा हाथ का वही स्ट्रेंथ जिसके तुम्हारा एंड्स को फिलअप करते हो, दैट इज एंड्स एंड मीन्स, यानी माध्यम, यानी यू कैन कॉल इट माध्यम, অতএব তোমরা বলতে পারো একে মিন্স মানে মাধ্যম, মানে একদিকে আছে আমার উদ্দেশ্য আর আরেক দিকে আছে আমার, হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্য, আমার প্রয়োজন, আমার ডিমান্ড, আর আরেক দিকে রয়েছে সেই ডিমান্ড পূরণ করবার জন্য আমার হাতে যে সম্পদ আছে, দ্য মিন্স, ইট মে বি ক্যাশ, it may be in any other wealth, okay, which have alternative use. That cares means have got its alternative use, okay. So this is the definition given by Mr. Lionel Ravens. Economics is the science which deals with human behavior as relationship between ends and scarce means. हम लोगों का ends है, ऑब्जेक्टिव है, हम लोगों का डिमांड है, wants है, डिज़ायर है, तो ये सब फुलफिल करने के लिए हमको क्या चाहिए, रिसोर्स चाहिए, एंड दिस रिसोर्स इज नोन एज मीन्स, एंड दिस मीन्स इज वेरी स्केयर्स, ओके, एंड the total thoughts of the behavior, total thoughts and behavior of the human being with relation to this is known as the science that deals with this type of behavior of human being is known as economics. So economics is the study, economics is the science which studies the human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Clear? And I will come once again दोस्त, मैं फिर भी इधर आएंगे. Let us consider the pertinent issues. First of all, I would like to let you know that Mr. Lionel Robin, इन्होंने सबसे बड़ा क्रिटिक था किसका, वेल्फेयर डेफिनेशन का, हाँ, तो वेलफेयर डेफिनेशन कौन दिए हैं, अल्फ्रेड मार्शल इज द ग्रेटेस्ट critics. So the concept of welfare has strongly been criticized by Mr. Lionel Robin. And this school of thought is basically known as modern concept of, modern definition of economics, or modern schools of thought, or scarcity oriented definition, scarcity. So this is the cornerstone, this is the basic issue of the analysis and analysis of economics as per the thoughts of Mr. Lionel Robin. There are two important ideas that center around the theory. What is that? In one aspect it is scarcity and the other one is choice. Now how do you relate scarcity with choice? I am coming to this part. देखो, we have the multiple ends, unlimited wants, okay. End means want. I have already told you ends क्या है, मेरा अभाव, मेरा डिमांड, मेरा चाहिदा, मेरा पसंद, जो हम चाहते हैं. तो आप लोग सोचिए फ्रेंड, वी हैव आवर लाइफ, हम लोगों का ज़िंदगी है, लाइफ एंड लिविंग. इसके लिए क्या होता है, वी नीड नेसेसिटीज़,
वी नीड्स, पकड़ लो, रोटी, कपड़ा, मकान, all these and many other things. So we have unlimited demand. इंसान का डिमांड ऑल टाइम अनलिमिटेड होता है. इसको अनलिमिटेड मीन्स क्या? आज एक है, बस आज एक डिमांड है, हम उसको फुलफिल करेंगे तो मेरा डिमांड कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, आज अभी फिलअप होगा तो दूसरा डिमांड आ जाएगा. हमको रोटी चाहिए, ठीक है, रोटी के साथ भुजिया चाहिए, ठीक है, लेकिन कल रोटी के साथ क्या चाहिए? मांस चाहिए. चलो मांस भी हो गया, लेकिन रोटी अच्छा नहीं लगता है, चलो परोठा लेकर आओ, तो परोठा के साथ मांस लेकर आओ. नहीं नहीं, ये अच्छे नहीं है तो एक काम करो, बटर नान बटर लेकर आओ, उसके बाद रुमाली रोटी लेकर आओ, उसके बाद बिरयानी लेकर आए. तो सो हम लोग को चाहिए, हम लोग को जो डिमांड, इट इज़ एब्सोल्युटली unlimited. There is no limit of demands. There is no limit of desire. Okay, there is no limit of wants. So human wants are generally unlimited. I am talking of the concept of a particular individual. Here, this Mr. Lionel Robin considered the individual. He has not. While Mr. Adam Smith has taken the whole issue of the nation, Mr. Lionel Robin is concerned with the individual. So his approach is individualistic approach, and it is basically the micro concept. He has not taken into account the whole economy. He has not taken into account. Yes, पूरा इकोनॉमी के लिए बात नहीं किए हैं. Whenever you are talking of the whole of the economy, then it is this is known as macro concept. That I will come later on. But he has concentrated. उन्होंने क्या क्या कंसीडर किया? इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. वो हर इंसान के लिए सोचे हैं. और it may be that he has thought of a particular firm, particular organization. So his approach is micro in scope. So micro analysis and individualist analysis. In individual, what happens? Each and every individual has multiple, that is unlimited wants. And these wants, I have already given you the example. आपको example दिए हैं. हर दिन ये बढ़ते रहते हैं in quality and in quantity. ठीक है? आज आप छोटे हैं, आज जब बच्चे हैं, आज सो पकड़ लो, अब 4 गो रोटी हाथ पे खाते हैं, और थोड़ा बड़े हो गए जब 6 गो 8 गो रोटी खाइएगा. और सिर्फ रोटी से नहीं चलेगा, जब टेस्ट बदल जाता है ना इधर उधर. आज चलो, आज रोटी खाते हैं, कल परोठा खाता है, परसों चाउमीन खाता है, उसके बाद बिरयानी खाते हैं, ठीक है ना. उसके बाद उसके साथ आइटम्स भी चेंज होते हैं. कपड़ा पहले हल्का कपड़ा पहनते थे, आज ऐसा दामी आपको बहुत कीमती आपको जीन्स पहनना पड़ेगा, जूता पहनना पड़ेगा, वो भी फटा हुआ जीन्स जो घर में फटा सकते हैं, लेकिन बाहर के फटा के ज़्यादा पैसा से लेकर आना पड़ेगा. सो ये आपको बहुत सारी डिमांड है. ये डिमांड बढ़ते ही रहता है. सो देयर इज़ अनलिमिटेड वांट्स, मल्टीपल एंड्स which increase in quantity and quality over time. तो आपको जो डिमांड है एक कभी ख़त्म नहीं होते हैं. आपको जो वांट है, आपको जो अभाव बोध है, जो फीलिंग ऑफ एब्सेंस ऑफ समथिंग, दैट इज़ वांट, एंड दैट नेवर फुलफिल बिकॉज इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. हर दिन बढ़ते जा रहा है. बढ़ते कितना? इन वॉल्यूम बढ़ते हैं, इन क्वालिटी में बढ़ते हैं. सो द ह्यूमन वांट्स, जस्ट टेक इट इनटू योर माइंड फ्रेंड. एक इन वन साइड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, unlimited one in one side. ठीक है? And this unlimited wants, it is not only unlimited in fixed tune, it changes over time. Quantity rises, quality rises. Okay, but quality differs. So एकदम माथा पे ले लीजिएगा क्या क्या concept है इनको. This man has basically stated that human wants are unlimited. इंसान का जो अभाव है, जो डिमांड है, एकदम अनलिमिटेड है. इसको कोई लिमिट नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता है. एंड it changes over time in terms of quantity and in terms of quality. Clear? So it is in one hand. तो आपको ये जो wants है, ये आप wants को कैसे फुलफिल कीजिएगा?
पकड़ लीजिए, आपको पापा को फैक्ट्री में इनकम है 25,000, पकड़ लीजिए, लेकिन आपको घर में आप हो, आपको बहन हो, आपको भाई हो, आपको घर में मम्मी नाना नानी बहुत कुछ है, सबके लिए इतना मेंटेन करने के लिए, तो ठीक ठाक मेंटेन करने के लिए मोरलेस 50,000 मिनिमम चाहिए। बट आपको हाथ पे कितना है बाबू? आपको हाथ में एक लिमिटेड मीन्स है। क्यों? कितना है? 25,000, पकड़ लो 25,000। चल देखो, ये जो तुम्हारा अनलिमिटेड वांट्स है, किंतु लिमिटेड मीन्स, लिमिटेड मीन्स लिमिटेड। देखो, वन इज अनलिमिटेड, ये बढ़ते जा रहा है, 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 और ये एकदम फिक्स्ड, एकदम फिक्स्ड, इट इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी देखो आप क्या कीजिएगा, विद द लिमिटेड मीन्स यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल योर डिमांड्स, राइट? यू कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल योर डिमांड, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, हमको इरादा है हर दिन मछली खाने के लिए, हिलसा पिस खाने के लिए, আমার ইচ্ছে করে সব দিন ইলিশ মাছ খাবো, সপ্তাহে 3 দিন ইলিশ মাছ খাবো, 3 দিন 2 দিন মাটন খাবো, 2 দিন চিকেন খাবো, কিন্তু হচ্ছে কোথায়? কেন? নট পসিবল, বিকজ দ্য ফান্ড इन माई हैंड इज़ वेरी लिमिटेड। सो आई हैव टू चूज़, हम इलिश खाएंगे ना रुई माछ खाएंगे, रुई नहीं खाएंगे ना कतला खाएंगे, हम मटन खाएंगे, मटन का 700-800 रुपया केजी मटन खाएंगे ना चिकन खाएंगे। अब चिकन भी तो आजकल बहुत भाव बढ़ गया है, चलो बाबू चिकन छोड़े আমরা একটু ডিম খাই। হ্যাঁ, আর ডিম যদি একান্ত এত না পারি তাহলে আলু পেঁয়াজ দিয়ে তরকারি করে একটু আমি নন ভেজ করে খাই। তাহলে we have to take that decision, we have to make that choice. क्लियर? आप लोग आर यू गेटिंग मी? तो देखो क्या बात है, in one side we have unlimited one, in the other side we have limited means, then we have to make a choice. Clear? हम किसको लेंगे, किसको का लेंगे, which want should be satisfied first and with what amount. So these two leads to choice. Okay, देखो, the question of choice comes when the means are limited, when the resources are limited, that is scarce in supply, yes, scarce. Okay, on one side our means are scarce but our wants are high, so we have to make a choice, we have to make a choice. And that behavior of human being is considered by Leonel Robbins in his theory, and this theory is basically known as scarcity oriented theory. Clear? Now you see, I am recapping, okay, recapitulating, okay, just as per Adam Smith, economics is the study of wealth. As per Alfred Marshall, economics is the study of welfare. The study of welfare has been strongly criticized by Mr. Leonel. He has said, no, in welfare economics, what has been considered, in welfare economics, the thing that has been considered is the material welfare. The total welfare of human being has not been taken into account by Mr. Alfred Marshall, and that is the objection, that is the criticism on welfare theory by Leonel Robbins, and he has given the definition where he has stated the economics is the science, it is the science which studies human behavior in relationship between ends and scarce means which have alternative use. आपको हाथ पे जो पैसा है वो पैसा को आप डिफरेंट तरीका से यूज़ कर सकते हैं. You have your fixed earning, you have your fixed wealth in terms of money. Okay, you have your fixed earning, you have your fixed wealth in terms of money in your hand. But आपको बहुत कुछ लेना है दोस्त,
लेकिन ये बहुत कुछ लेने के लिए ये जो अनेक किछु তোমার প্রয়োজন কি, তোমার প্রয়োজন অনেক 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 কিছু, কিন্তু হাতে আছে নির্দিষ্ট সীমিত অর্থ। এই সীমিত অর্থ দিয়ে সব কিছু তো আমি কিনতে পারি না, সব কিছু তো আমি জোগাড় করতে পারি না। হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, উই হ্যাভ টু চুজ, we have to choose what आज क्या लेंगे, इससे क्या लेंगे, क्या नहीं लेंगे. So we have to take the decision, and this decision is based, that is the process of choosing one out of the many with the help of limited resources. That is, I am writing over here, choosing one out of the many with the help of limited means, that is scarce means. So in that case, that is the question of choice, and so the basic dimension of his theory, in the theory of Lionel Robbins, that is scarcity oriented theory, the two aspects are the important. One is choice and the other one is scarcity. The question of scarcity, what is the resource is scarce in relation, so means are scarce. हाथ में रिसोर्स कमती है लेकिन डिमांड बहुत है, तो क्या आई कैन नॉट, हम हर डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, हम ऑल डिज़ायर को, ऑल वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स एट द सेम टाइम, बिकॉज हमारा हाथ पे क्या है, हमारा हाथे কি আছে, কম পয়সা আছে, কম অর্থ আছে, রিসোর্স কম, হাতে ওয়েথ কম, কিন্তু আমার প্রয়োজন অনেক, এবং তখনই আমাকে ডিসিশন নিতে হয়, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু চুজ. ওকে, সো হোয়াট উই হ্যাভ টু চুজ, উই হ্যাভ টু চুজ আউট অফ দ্য মেনি. ওকে, and this type of behavior is basically traced by Mr. Lionel Robin. तो Robin ने यही बात तो बोले हैं. Okay, and Robin is, and this man is concerned with the micro aspect. Micro means he is concerned with the individual behavior of the individual, and देखो human behavior. Okay, he is not taken up the behavior individual living in a society. It is not considered the total society. It does not consider the total of the society. It does not consider the whole of the nation. So his view is individualistic. क्योंकि it is माने एक व्यक्ति সম্পর্কিত. Okay, it is not in a large scale. It is not macro concept. Clear? So economic problems of constrained optimization. Now I am coming to let you know this concept, constrained optimization. What is optimization? Optimization, देखो we know the concept of minimization. Okay, minimization means इसको कमती से कमती और कमती और कमती, मैक्सिमम पॉसिबल लोएस्ट लिमिट, मैक्सिमम पॉसिबल लोएस्ट स्टेट, मैक्सिमम पॉसिबल लोएस्ट स्टेट মানে सबसे कमती মানে সব থেকে কম, যার পর আর কম হতে পারে না, দ্যাট ইজ নোন এজ মিনিমাইজেশন. and the other one is maximization. What is the concept of maximization? Maximization means একে বাড়িয়ে যাওয়া, বাড়াও, make go on enhancing and enhancing. इसको बढ़ाते चलो, एके बढ़िए चलो, যত পর্যন্ত বাড়ানো যায় मैक्सिमम. इसको बढ़ाते चलो जब तक इसको मैक्सिमम आप बढ़ा सकते हो. You carry it to that limit to up till which you can go. That is maximization, and that is the question of maximization. And minimization is the reduction, is the maximum possible reduction. That is minimization. Or maximization is the maximum possible highest level. Clear? But just as an individual, you have your wants, unlimited wants. I have already told you repeatedly, तुम्हार अभाव, असीम अभाव, आपको जो अभाव है ये इसको कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड, बट आपको हाथ पे
क्या है, रिसोर्स बहुत कम थी, लिमिटेड है। तो अब आप क्या कीजिएगा, ये लिमिटेड रिसोर्स के अंदर में जितना मैक्सिमाइज किया जाएगा दैट इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, चलिए ऑप्टिमाइजेशन का डेफिनेशन क्या है बाबू? ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली इज द ऑप्टिमाइजेशन है, आई एम राइटिंग ओवर हियर फ्रेंड, ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ maximizing something with the help of limited means, তোমার হাতে লিমিটেড মিনস রয়েছে, ওই লিমিটেড মিনস থেকে যতটা তুমি তোমার অভাবকে পূরণ করতে পারো, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস অফ অপটিমাইজেশন। ঠিক আছে, তাহলে অপটিমাইজেশন ইজ দ্য প্রসেস অফ ম্যাক্সিমাইজিং your satisfaction. Here the optimization means the maximization of your satisfaction with the help of means which is highly limited, and that is your constraint. Okay, because you are constrained with your means, and that is known as constraint optimization. Clear? The concept of constraint optimization. Constraint optimization is the process of maximizing your want, in this case maximizing something with the help of limited means, limited efforts. देखो मैक्सिमाइज करना, क्या करना, आपको जो नीड्स है, आपको जो वांट है, आपको जो सेटिस्फैक्शन है, उसको मैक्सिमाइज करना। कैसे करोगे? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड मीन्स। और लिमिटेड मीन्स को साथ हम जब कोशिश करेंगे मेरा सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट हो, मैक्सिमम हो, दैट इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर? तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिज थ्योरी। क्लियर? नाउ what are the basic pertinent basic facets, basic features of his? It's the unlimited human wants. I have already told you human wants are unlimited. Clear? Because man is not at all a satisfied fellow. He has his wants, he has his desire, goes on increasing every time, over time, not only in quantity but also in quality. So unlimited human wants. Limited scarce means wants तुम्हारा limited हो सकता है, लेकिन तुम्हारा हाथ पे जो तुम्हारा इनकम बोलो, तुम्हारा जो वेल्थ बोलो, वो तो बहुत कमती है, बहुत लिमिटेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, एंड आपको सबसे बड़ा बात है द स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज, ऑल्टरनेटिव यूज़। आपको हाथ में जो मनी है, वो मनी को आप डिफरेंट तरीके से व्यवहार कर। सोचिए, आपको घर में जो चावल है, वो चावल आप डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। चावल को भात बना सकते हैं, ओके, उसके चावल को पीस के उसको बड़ा उड़ा हन पीठा बना सकते हैं। इस चावल से आप बिरयानी बना सकते हैं। सो द थिंग्स आर ऑल्टरनेटिव यूज़। ओके, आपको हाथ में जो पैसा है, पैसा को आप बहुत कम पे लगा सकते हैं। चलो सोचो आपको हाथ में 50,000 रुपया है, आप एक काम कीजिए, एक्स्ट्रा रुपया ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप बैंक में रख के सूद ले सकते हैं। नंबर 1, आप कोई शेयर्स खरीद कर सकते हैं, ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई बाजार में किसी को उधार भी दे सकते हैं। सो देयर आर ऑल्टरनेटिव यूज़। सो द फंड्स हैव इट्स ऑल्टरनेटिव यूज़। ओके, बट योर वांट्स आर अनलिमिटेड। आपको इसके अंदर में बैलेंस करना पड़ता है। क्लियर? तो एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। नाउ ये जो दो रिसोर्स, स्केर्स रिसोर्स क्या, आपको हाथ में जो वेल्थ है, आपको हाथ में जो फंड है, आपके हाथ में जो पैसा है, ये है, दिस इज़ वेरी स्केर्स रिसोर्स, एंड दिस स्केर्स रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज़। एंड यही ऑल्टरनेटिव यूज़ हमको है बोल के ही हमको क्या करना पड़ेगा? देयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ चॉइस एंड ऑप्टिमाइजेशन। I have discussed all this. Optimization is the process of maximizing the satisfaction with the help of limited resource, that is optimization, and in that we have to make a choice. You have to take the decision which one I should satisfy first. And then economics, thus economics is the science. Here stated economics is the science, because a systematic knowledge
with regards to the human efforts. अभी देखो जो टोटल जो मटेरियल तो है वो हम आपको बता रहे हैं. तो क्लासिकल डेफिनेशन एडम स्मिथ क्या बोले हैं? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ science inquiring the nature and cause of wealth. He is concerned with production and accumulation of wealth, material wealth. Mr. Alfred Marshall of neoclassical school, he has stated economics is the basically is the study of man in the ordinary course of business life, and here he has concerned much more with welfare of the human being, welfare of the man, and this material welfare. He has not taken into consideration the non-material well-beings like services and others have not been taken into account. Okay. Now the basic criticism of Alfred Marshall's theory of welfare definition has come from Lionel Robbins. He has given the definition. He has stated that economics is the science. He has not taken the economics as an art, but I would come to this part later on. Is a science. What is science? Science is विज्ञान, विशेष ज्ञान. Science means क्या? विज्ञान. विज्ञान माने काके वाले? विज्ञान अर्थ जो विशेष ज्ञान. What is specialized knowledge? तो economics is the specialized knowledge of whom? Economics है एक special ज्ञान. किसके लिए? देखो, to make a choice. किसके लिए choice? You have to make a choice. Choice to what? To what to buy, what to collect, what not to collect is a choice. Choice of what? Choice of something. Which something? The choice of something which will satisfy my unlimited, which will satisfy my demand, my want. This wants are unlimited. Science is the behavior of human being. Human being यही behave करेंगे क्या? हमारा हाथ पे बहुत कमती एंड कमती रिसोर्स है. माई रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन नेचर, बट मेरा हाथ पे क्या है? मेरा मैंने ज़रूरत क्या है? बहुत ज़रूरत है. आई हैव अनलिमिटेड वांट्स. सो वी हैव अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड विद दिस लिमिटेड रिसोर्सेज unlimited wants all the wants cannot be satisfied. Then we have to choose. So the question of choice comes why? And the behavior of individual with respect to the making choice is economics. Clear? तो हम लोग ये choice क्यों करेंगे? Because the resource, the means is scarce. तो देखो, the pertinent aspect is number one, unlimited wants. Clear? Limited means. Limited means, as limited means, the question of limited means is there, the human being has to choose, and it is economics that the study of the behavior of that individual in the micro level. Okay, and by choosing what he does, he basically try to optimize his satisfaction, and the process of optimization of satisfaction with the help of limited resource is known as constraint maximization, optimization, and this is the basic facets of Lionel Robbins' theory. Clear? Now this theory, so I am telling unlimited human wants, limited scarce means, and this scarce means has alternative uses, and since the alternative uses are there, we have to make the efficient use. देखो, means are scarce, they have scarce means have alternative use, and since alternative use is there, we have to make the efficient use. Why? Because we have to choose, that is, we have to reach at the optimum optimization. We have to attain our objective of optimization, and in order to make that, I have to choice. I have to make the choice, and the choice and scarcity. So the basic issues which are related to this definition: unlimited wants, limited means, scarcity, question of choice. Okay, and this choice basically helps us leading to optimize our objective or optimize our satisfaction, and that is the constraint optimization. Okay, friend. Now what are the criticisms? Those have been leveled against this narrow view of economics. Economics is positive science by making it neutral between ends. देखो, what is said? इकोनॉमिक्स कोई एक इंसान का एंड्स एंड मीन्स लेकर काम नहीं करते हैं. ओके, according to his view, he has studied human behavior. It is a very, very individualistic approach. It is a micro concept, but economics is more than that.
Economics has got huge dimension, and so it is a very narrow concept, and it is a positive science. Economics is a positive science which entails huge number of activities, not only of an individual, not only of a particular society, but of the whole of the nation. Okay, and it is a macro concept has been neglected, that I have already told you. The concept of here Adam Smith has stated that economics is a study that inquires into the nature and causes of the wealth of nation, but the question of nation is not over here. Okay, so economics is more than a valuation theory. So but it is only not the making the choice of what I should, which my demand should be satisfied, which one should be satisfied. That is very, very narrow. So the economics is more than the only individual behavior. So Mr. Lionel Robbins is concerned with the human behavior, individual behavior, but economics is not only the behavior of an individual, it also concerned with the behavior of groups, behavior of the different enterprises, commercial, industrial enterprises, service organizations, and also the governmental organization, and above all the economy. So the economy is not only a valuation theory, it should not only consider with an individual. And economic is both science and art, because the man has said that it is concerned with the how the human being should behave, but in what way he actually behave, that is the art, that is the application. So he has given some laws, he has given some set of laws, but this set of laws will be of no efforts, will no use until and unless it is applied in our life. So the art, economics is not only science, it is also art. And restricted subject matter, his subject matter is only concerned with choice, scarcity, unlimited ones, scarcity and choice. So this is the vital issues in his definition, and that is very, very narrow concept. Okay, and economic problem not always arise out of scarcity, but I am coming to that point. He has said the basic greatest objection against him, that he has stated that that जिंदगी में जो प्रॉब्लम आता है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, वो स्कैरसिटी से आता है. Not at all. What happened? Do you know, during the Great Depression in England, okay, what happened? The production was very high, but still people died in hunger. Why? It was not the scarce, the resource was not scarce, but what happened? It happened because of the highest, very high rate of increment in population. So this is the issues. Okay. So friends, these are the basic facets of Lionel Robbins' theory. It is known as modern theory of economics, and it is known as scarcity oriented theory. The basic facets, basic issues in his theory is that unlimited human one. Number one, he studied, in a nutshell, I am letting you know, he studies individual behavior, human behavior in individualist approach. So he has taken the micro aspect of economics, number one. He has stated only the behavior, how the human being should behave. So he is concerned with science, but economics is more than science. It is science, it is art also. Okay, and he has taken micro aspect, but economy is more than that. It is also concerned with it should be concerned with the nation and even the world. Okay, and since human beings are having unlimited wants or the limited resource, that is scarcity is means is very scarce in relation to the demand. So you have to make a choice, and while making choice, he has to try to maximize his satisfaction with the help of limited scarce resource, and that is known as constant maximization, optimization. Okay, so friends, this is the total of the theory, and in the next class I will take up the overall analysis, the next theory given by the growth oriented theory given by Mr. Professor A. Samuelson. Okay, so thank you very, very much.